Good morning, dear students. Welcome back to Study Solution with Ravi Kumar. Today, we are going to read a very interesting story from your English book, Lesson 12, The Stone Guru. It is a story full of respect, discipline, and devotion towards the teacher, the Guru. So children, let's start our story. Scene 1. Guru Dronacharya is teaching archery to the Pandavas and Kauravas. Eklavya enters. Eklavya comes and greets Guru Dronacharya saying, Namaste Gurudev. The Guru also replies, Namaste. Come near, young man. Eklavya tells that he lives in the forest nearby and he knows that Dronacharya is the greatest teacher of archery. बच्चों, इस दृश्य में एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से मिलने आता है। वह नमस्ते करता है और कहता है कि वह पास के जंगल में रहता है और जानता है कि गुरु द्रोणाचार्य सबसे महान धनुर्विद्या आर्चरी के शिक्षक हैं। Eklavya says he wants to be the greatest archer in the world and he can achieve that only under Guru Dronacharya's guidance. But Guru Dronacharya tells him that he teaches only royal princes like the Pandavas and Kauravas. एकलव्य कहता है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता है और यह केवल गुरु द्रोणाचार्य के मार्गदर्शन से संभव है। पर गुरुजी कहते हैं कि वे केवल राजकुमारों को ही सिखाते हैं। एकलव्य रिप्लाइज पोलाइटली, नो प्रॉब्लम गुरुदेव. वेदर यू एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल और नॉट, यू विल ऑलवेज रिमेन माई गुरु. एकलव्य बहुत विनम्रता से कहता है, गुरुदेव, आप मुझे शिष्य स्वीकार करें या न करें, आप सदा मेरे गुरु रहेंगे. Moral point: Eklavya had great respect and devotion for his teacher. Scene 2. Guru Dronacharya is busy teaching. A dog comes running with its mouth full of arrows. Arjuna says, what a wonderful shot. The dog's mouth is full of arrows, but there is not a single drop of blood. Guru Dronacharya is amazed and says, who has done it? They all go to the forest and find Eklavya practicing in front of a stone statue of Dronacharya. दूसरे दृश्य में जब गुरुजी पांडवों को सिखा रहे थे, एक कुत्ता मुंह में तीरों से भरा हुआ वहां आता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुत्ते को चोट नहीं लगी। वे जंगल में जाकर देखते हैं कि एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य की पत्थर की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा है। गुरु, हाउ डिड यू लर्न आर्चरी? एकलव्य, इट्स ऑल योर ग्रेस गुरुदेव. यू आर माई टीचर. गुरु, सरप्राइज्ड, आई नेवर टॉट यू. Then Eklavya points to the stone statue and says, Gurudev, I made your statue. I never shot an arrow without taking your permission. गुरुजी पूछते हैं, तुमने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य कहता है, आपकी कृपा से गुरुदेव. वह बताता है कि उसने गुरुजी की मूर्ति बनाई है और अभ्यास करते समय हमेशा उनकी अनुमति ली है. The test of true devotion. Guru Dronacharya blesses Eklavya and says, You have accepted me as your Guru, so now you must give me Guru Dakshina. Eklavya says, I am ready. I can sacrifice my life for you. But Guruji says, no, I only want your right thumb as my Guru Dakshina. Eklavya immediately cuts his right thumb with an arrow and offers it at his Guru's feet. गुरुजी कहते हैं, यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो गुरु दक्षिणा देनी होगी. एकलव्य कहता है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं. पर गुरुजी कहते हैं, मुझे केवल तुम्हारा दाया अंगूठा चाहिए. एकलव्य बिना देर किए अपना अंगूठा काटकर गुरुजी के चरणों में अर्पित कर देता है. मोरल ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी ऑफ एकलव्य टीचेस अस द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, फेथ, डेडिकेशन एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द टीचर. Even though Guru Dronacharya refused to teach him, Eklavya never stopped respecting his Guru. यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने गुरु का आदर, विश्वास और आज्ञा का पालन करना चाहिए. एकलव्य ने सच्ची श्रद्धा से बिना सिखाए ही सब कुछ सीख लिया. न्यू वर्ड्स. आर्चरी, द स्किल ऑफ शूटिंग एरोज. डिसाइपल, स्टूडेंट और फॉलोअर. ब्लेसिंग, गुड विशेस. ग्रेस, मर्सी और फेवर. सैक्रिफाइस, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल और लाइफ. आर्चर, बोमैन. गुरुदेव बटा गुरु टीचर. अटेम्प्ट, ट्राई और एफर्ट. पेशेंस, एंड्योरेंस और एबिलिटी टू वेट कामली. दक्षिणा, ऑफरिंग और फी गिवन टू द टीचर. एक्सरसाइज. 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A. Who came to see Dronacharya? Answer: Eklavya. B. What was the purpose of Eklavya?
Answer. He wanted to be the greatest archer of the world. C. What was full of arrows? Answer. The dog's mouth was full of arrows. D. Why did Dronacharya not teach Eklavya? Answer. Because he taught only the royal princes. E. What did Eklavya give as Guru Dakshina? Answer. His right thumb. 2. Write who said to whom. You are the greatest teacher of archery. Eklavya Dronacharya. I teach only the royal princes. Dronacharya Eklavya. That dog's mouth is full of arrows. Arjuna Dronacharya. I shot any arrow after taking your permission. Eklavya Dronacharya. I want my Guru Dakshina. Dronacharya Eklavya. Teen. Fill in the blanks. A. The rich have much wealth. B. She has read many books. C. Priya has no water. D. His health is very good. 4. Arrange the following words in alphabetical order. A. Apple, zebra, bat, tree, pencil. Answer. Apple, bat, pencil, tree, zebra. B. Tomato, papaya, parents, dog, yak. Answer. Dog, papaya, parents, tomato, yak. C. Shirt, cook, habit, horse, igloo. Answer. Cook, habit, horse, igloo, shirt. D. Ant, arrow, aeroplane, axe, as. Answer. Aeroplane, ant, arrow, as, axe. E. Lion, lamp, lake, lotus, lemon. Answer. Lake, lamp, lemon, lion, lotus. 5. K and S sound words, coloring activity. K sound words cattle, catch, cook, cool, cycle, cat, clay, cold, cave, clear. S sound words custom, cover, center, cell, cylinder, cement. 6. Make sentences from the given words. A. Purpose, I do things for a purpose. B. Permission, they want your permission. C. Performance, your performance is good. D. Prince, he is a prince. E. Possible, it is possible for me. F. Perfect, I am perfect for this work. So children, this was the beautiful and inspiring story of Eklavya and his Guru Dronacharya, the Stone Guru. It teaches us that true learning comes from respect, devotion, and practice. If you liked this explanation, don't forget to like, share, and subscribe to Study Solution with Ravi Kumar for more Class 4 lessons.